Hello everyone, welcome to the video and I hope you all guys are sound in wind and limb here. In this video today I will throw light on some such vocabulary words as well as such kind of sentences that you can include in your task 1 to get a very good IELTS score. Basically in earlier videos also we have discussed the various parts that we need to keep in our mind while writing task 1, that are task achievement, coherence, cohesion, grammatical range and accuracy, and the last one but not the least one is our lexical resources. So getting an overview of these things, first of all, the task achievement stands for the mentioned data of your task. It stands for the data or the report which you are writing. So whenever you are writing a report, try to mention each and every data precisely. I don't mean that you should write all of the data, I mean each and every data precisely. It means that keep it in mind that whenever you are writing your task 1, the data whichever you are writing is specific, is important for that report. Don't skip too much of data and don't skip too less data. Just keep in mind that at least you have to write 150, but at most the upper limit in IELTS is still not given. In your writing task sheet also you will never see a column for over length, rather there is a column for under length. So please keep in mind that you have to write at least 150 words. Afterwards, the coherence, cohesion. Coherence is for the flow of your writing as well as the structure, while cohesion, it is for the linking and connecting of your sentences. It means that your reader should understand your sentences in a smooth manner. They should not sound rough while reading to the reader of your exam. Afterwards comes your grammatical range and accuracy. Grammatical range means that you have a good hold over the grammatical sentences and grammatical structures, while the grammatical accuracy means that your sentences are correct and are subtly written in your task. Last one, lexical resources. It stands for vocabulary, but by saying vocabulary it doesn't mean that you have to write very complex and highly defined words of the dictionary. Rather you can use very natural vocabulary, and that too should be used in a proper way. If you are unable to use the natural vocabulary in a proper way, then your high-fi vocabulary will not even get a good band score. It will also get a very low score. So keep in mind that all of these criterias are marked out of 9. You get 9 out of 9 bands in task achievement, out of 9 in coherence, cohesion, and same is for the rest of the 2. So keep in mind that you have to keep these 4 things in your mind while you are preparing for your task. Afterwards, what you should do before starting your task, I wholeheartedly mention that whenever you are writing your task, keep in mind that you should take out 5 to 7 minutes for preparing, not 5 to 7 for task 1 only. I mean that you should take 2 minutes, hardly 2.5 minutes are more than sufficient to prepare your task 1, while the rest of the time like 4 or 5 minutes can be utilized for the task 2, because we have to think about the ideas. But in task 1 we just have to keep the data in a structure. So try to use a 5 to 7 minute time span for preparation of your task before writing it. Afterwards, as we have discussed that cohesion in our writing task, coherence and cohesion, they stand for the structure of our writing. So there is a structure for task 1 also. We all are aware that we have to write an intro, overall, body paragraph 1 and body paragraph 2. But many of you don't even know that how this structure should be planned. There is a planning of this structure also, and each and every paragraph stands for 25% bands of your overall band score. It means 25% bands are for your intro, 25% are for your overall, and rest 50 are divided into body paragraphs. Okay, now returning to the structure of your task 1. So first of all is the intro.
By intro, we mean that you have to write the sentence or the statement of your report, like you have to mention that what thing is going on, when it had happened, what was it about, and why was it done, on where it was done. These things should be mentioned in your introduction. It means you should rephrase the sentence. Don't just add synonyms. If you are unable to rephrase the sentence into new one, just write down the synonyms. But in case you have a good hold over sentences of the grammar of English, then try to restate the introduction in a very different manner. Like, do prefer changing the formation of the intro. Like, if there a simple sentence, an active voice sentence has been written, try to convert it into a passive voice sentence. You will surely get a good band score in grammatical range. Next, you can even prefer adding a relative pronoun. In earlier videos also, I have mentioned that you should use relative pronouns in your introduction whenever you are writing an introduction. So all these things can be done, and in detailing we will surely post a video on grammatical range building up. So just subscribe the channel and like the videos also if you want to get some good stuff to get a very good band score. Afterwards, coming to the overall, there is a debate that whether we should write the overall before starting body paragraph 1 or after writing down the body paragraph 2. Well, I would like to mention that there is no hard and fast rule. It is not said by IDP or BC that you should write overall before body para 1 or you should write it only before body paragraph 2. Unless you do so, you will get a very low score. No, this is not the case, and no, none of the IELTS agencies, IDP, BC, have stated anything about overall. It's your wish. You can write it before body paragraph 1 or even after body paragraph 2. But there is a method of writing body paragraph 2 also. Sorry, writing your overall also. So in overall, first of all, the thing that you should remember is that avoid mentioning the values in overall. We never ever mention the values or the proportion of our illustrations in our overall. Rather, you should try to write the most significant thing in the overall. Like, if there is a dramatic change in something, if the line chart, especially in the line chart, if a line or if a trend is moving dramatically, it is constant, it has fluctuations, these all things should be written in overall. Or you can say, if there is a great difference coming, like something is becoming a half, a double, 7 times, 10-fold, then these things should be written in the overall. And the most important point to be noted about the overall is that always try to develop your overall into a complex one. In order to do so, try to use comparisons in your overall. Never ever write only the maximum and minimum in the overall. Rather, you can use comparisons. Like, you can write, if we are given two things, like in India the birth rate was 10% in 2000, and by 2010 it became 20%, while in China the birth rate in 2000 was 10%. In the 2010 the birth rate of China increased to 70%. So in overall we can write that although in both the countries with the passage of time the birth rate increased, however the increase in birth rate of India was not as dramatic as was in case of China. So this thing is a complex one. This overall will score a very good bands because it has included an comparison. A comparison is must if you want to score a good band score in the overall section. Afterwards comes our body paragraph 1 and body paragraph 2. In these two paragraphs, our aim is just to explain the values, and never ever use your own perceptions in your task 1. If you do so, you will lose your band scores. So just keep an eye on values, and rather than repeating unnecessary details, just write down the details which are needed by the examiner to properly understand the illustration that you are writing about. So wrapping up the discussion,
it is in this video we have learned that first of all comes our intro, next comes our overall. It is not just an overall, rather it is a paragraph that includes comparison. So this is the structure, that first of all you will write an introduction, that what you are writing about. Afterwards you will write a paragraph that includes the comparison of your details, and there is no limit for an overall. Like it is not compulsory that your overall should be below 5 lines. You can write even 7 lines overall also. So just try to use as many comparisons as you can in your overall paragraph. Afterwards, in body paragraph 1, body paragraph 2, just focus on writing details, writing values, not focus on other unnecessary things. Now coming to our today's task. In this task you are given 2 illustrations. The first one is the line chart and the next is the bar graph. So first, the line chart, it is showing that the temperature of East Africa's particular region, and the bar chart is for the changes in the precipitation. That means the change in the rainfall. It is clear that the line of the chart is illustrating the details about the temperature, and the rainfall has been measured with the help of the bar graph. So writing down the introduction, as here we are provided 2 different illustrations that have 2 different information. So if you want to score good bands in your introduction, just try to write down the introduction for both differently. Don't just mix the introduction, rather you can write it differently so that it will be clear to the reader. Like we can write down that the line graph demonstrates that how the temperature of East Africa's specific region altered with the passage of months during an annum, while bar graph stands for the changes in the precipitation or changes seen in the precipitation. So here we have written the introduction differently. Also we have changed whole structural formation of the introduction. We were given just a simple line in the statement about the survey, but in this introduction we have totally changed. Like we have written that how the temperature of East Africa specific region changed. हमें वहाँ पे जस्ट ये दिया था कि टेम्परेचर कितना था, हमने क्या लिख दिया कि वो कैसे चेंज करा है एक ईयर के अलग अलग मंथ्स में. एंड फॉर द बार चार्ट वी हैव रिटन दैट चेंजेस सीन इन प्रेसिपिटेशन. लाइक हम रेनफॉल के लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन, और हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो प्रेसिपिटेशन में चेंजेस दिखे थे वो हमने कहाँ पे यूज़ किए हैं, कहाँ पे मेजर किए हैं, इन द बार ग्राफ. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट कंपैरिजन पैराग्राफ, दैट मीन्स अवर ओवरऑल. यू कैन राइट दैट in overview, simultaneous fall in the average rainfall and temperature was observed during the mid of the year as compared to other months. So here we have compared rainfall temperature also and the months also. So हमने क्या लिखा है, simultaneous fall. simultaneous fall क्या होता है, जो साथ साथ आती है. लाइक आप देख सकते हो जून टू सितंबर में टेम्परेचर तो डिप कर ही रहा है, उसके साथ जो हमारी रेनफॉल है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी. सो हम ये बात लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन थी दोनों में एक साइमल्टेनियस फॉल आई थी बाय द मिड ऑफ द ईयर. ड्यूरिंग मिड ऑफ द ईयर का मतलब क्या हो गया, मिड ऑफ द ईयर के दौरान. एंड द मंथ्स दे वर अननेसेसरी, सो वी हैव रिटन जून टू सितंबर. हमने जून टू सितंबर बता दिया कि मिड कौन सा है हमारे स्टार्ट का, जून टू सितंबर एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स. सो हमने सभी चीज़ों को कंपेयर कर दिया एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ओवरऑल दैट यू कैन राइट इन दिस टास्क. आफ्टरवर्ड्स कमिंग टू अवर बॉडी पैराग्राफ. मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉडी पैराग्राफ बनाया बिकॉज इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू सेग्रीगेट द डेटा इन 2 बॉडी पैराग्राफ्स. यू कैन इवन राइट अ सिंगल बॉडी पैराग्राफ ऑल्सो इन योर task, but the condition is that you have to write all the details. It is not relaxation, there is no relaxation in skipping the details unnecessarily. Until your data is properly mentioned, finely mentioned, you can write the whole data in body paragraph 1 only. Now starting our body paragraph 1.
By analysis of the chart it is clear in terms of temperature. तो मैंने स्टार्ट करने से पहले बता दिया कि now I am talking about temperature. So ये होता है एक स्ट्रक्चर कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो सबसे पहले उसका मेंशन करो. In terms of temperature एट द ऑनसेट ऑफ ईयर, ये भी एक अच्छा वर्ड है वोकैब का. एट द ऑनसेट मीन्स एट द स्टार्टिंग. ये किसी भी टाइम पीरियड के लिए यूज़ हो सकता है. लाइक जब भी आप टाइम पीरियड की स्टार्ट की बात कर रहे हो, इनिशियल ईयर लिखते हैं हम, उसको आप क्या लिख सकते हो, एट द ऑनसेट. एट द ऑनसेट ऑफ ईयर, इसमें क्या आ गया हमारा, जैन मंथ. द एरिया हैड अबव 215 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सून बाय द थर्ड मंथ, अब हमने एट द ऑनसेट लिख दिया, उसमें जनवरी भी कवर हो गया, फेब भी कवर हो गया. सो हमने उसके बाद किसकी बात कर दी, मार्च की. अब हमने यहाँ पे डेटा स्किप किया है. सो दिस थिंग यू कैन ऑल्सो अप्लाई. जब भी आप डेटा स्किप कर रहे हो, ट्राई टू डू इट इन अ वेरी गुड मैनर. वो दिखना नहीं चाहिए कि हाँ यहाँ पे आपने डेटा स्किप किया है. रादर इट शुड बी कवर्ड बाय योर टास्क डिटेलिंग ओनली. Soon by the third month it arrived the peak. पीक की वैल्यू कितनी थी, 24 डिग्री सेल्सियस. देन आफ्टर डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली द टेम्परेचर डिप्ड इन जुलाई एट 20.5 डिग्री सेल्सियस. द incline seen from August to September was abrupt and another highest value of temperature was recorded in October as same value as was during March. So हमने सितंबर तक का, अक्टूबर तक का सारा डेटा मेंशन कर दिया. पहले बता दिया कि थर्ड मंथ में जो टेम्परेचर था वो पीक पे चला गया. उसके बाद क्या आया, ग्रेजुअल डिक्लाइन. ग्रेजुअल डिक्लाइन मीन्स स्लो डिक्लाइन. देन उसके बाद जो टेम्परेचर था इट डिप्ड इन जुलाई. जो टेम्परेचर था वो डिप कर गया जुलाई में. डिप मतलब सडनली वो डिक्रीज़ कर गया. कहाँ पे चला गया, 20.5 डिग्री सेल्सियस पे. द इंक्लाइन सीन फ्रॉम अगस्त टू सितंबर. उसके बाद जो अगस्त टू सितंबर इंक्लाइन आया था इट वॉज़ वेरी एब्रप्ट. और उसके बाद अक्टूबर में एक नई हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी. और जो ये वैल्यू थी इट वाज सेम वैल्यू एज वाज ड्यूरिंग मार्च. तो क्लियर हो गया कि अक्टूबर में भी 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था. सो दिस इज़ द कम्प्लेक्स राइटिंग. आई हैव जस्ट मर्ज्ड द सेंटेंसेस. सिर्फ सेंटेंसेस मर्ज किए हैं, यहाँ पे कुछ नया स्ट्रक्चर नहीं लगाया हमने. सो अननेसेसरी आप लोग बार बार द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, ये थिंग्स हम रिपीट करते हैं. सो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ स्किपिंग अननेसेसरी डेटा. ठीक है, नेक्स्ट देखो. After this, the temperature fell in slanting manner to below 22 डिग्री सेल्सियस by दिसंबर. हमने अब अक्टूबर के बाद सीधा ही दिसंबर का डेटा लिख दिया. क्या लिखा है हमने, जो टेम्परेचर इट स्टार्टेड टू फॉल इन अ स्लैंटिंग मैनर. वो स्लैंटिंग मैनर में फॉल कर रहे. आपको दिख रहा है कि वो हिल के टॉप से नीचे आ रही है, जैसी स्लांट होती है, ढलान होती है एक, वैसा मैनर. तो हमने क्या लिख दिया, इट फेल इन अ स्लैंटिंग मैनर टू बिलो 22 डिग्री सेल्सियस बाय दिसंबर. के दिसंबर तक वो स्लैंटिंग डिक्रीज़ के बाद कहाँ आ गया, 22 डिग्री सेल्सियस पे. नाउ examining the details about rainfall. During the first half of the year, the rainfall was below 50 millimeters in January and February. हमने सीधा फर्स्ट हाफ से स्टार्ट किया कि जैन फेब में जो रेनफॉल थी वो कहाँ पे थी, बिलो 50 मिलीमीटर्स. ऑन द contrary, in April, the highest ever recorded rainfall level was seen greater than 250 millimeters. हमने बता दिया कि जो अप्रैल में था, जैन फेब में लो थी रेनफॉल 50 मिलीमीटर्स पे थी. ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स ऑन द ऑपोजिट साइड, जो अप्रैल था वहाँ पे हाईएस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल का लेवल देखा गया था. हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड मतलब पूरे साल में से हाईएस्ट. उसके बाद ये उसकी वैल्यू थोड़ी सी हमें नहीं इतनी ज़रूरी थी, तो हमने क्या लिखा, उसे ब्रैकेट में लिख दिया. नेक्स्ट, आफ्टर दिस द वैल्यू प्लमेटेड एंड मेंटेन्ड constant level of slightly above 0 millimeters from जून टू सितंबर. कि जून से सितंबर तक जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट रही थी. कब कांस्टेंट रही थी, एक डिक्रीज़ आने के बाद. अगेन फॉर नेक्स्ट 2 months द वैल्यू रिमेन्ड आइडेंटिकल. अगेन उसके बाद वाले जो 2 months थी उनकी वैल्यू भी आइडेंटिकल थी. एट 3 times लोअर फिगर वॉज ऑब्जर्व्ड इन द एंड. कि जो लास्ट ईयर था वहाँ पे 3 times लोअर. तो पहले 2 months में 150 थी, लास्ट 3 years में कितनी होगी वो 50 डिग्री सेल्सियस, 50 millimeters. So this is the proper way in which you can structurally organize your whole of the
डिटेल्स। तो इसमें आपने देखा कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं हम, लिंकिंग के साथ चल रहा है। ये नहीं है पहले जैन की बात हुई उसके बाद सीधी सितंबर पे आ गई, फिर सितंबर से मार्च पे आ गई। नो, प्रॉपर एक सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं हम, फर्स्ट से लास्ट तक जा रहे हैं। सो ट्राई टू राइट ऑल द डिटेलिंग इन दिस मैनर ओनली, एंड इफ़ यू गाइज try have a good idea दैन दिस वन, अगर आपके पास इससे भी अच्छा आइडिया इसको लिखने का, देन यू कैन शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हो इवन। सो उसके बाद अब आप वोकैबुलरी देख सकते हो जो हमने लिखी है स्टार टास्क में। फर्स्ट वर्ड था रेनफॉल, उसके लिए हमने वर्ड की यूज़ किया है प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट, चेंज के लिए ऑल्टर्ड लिख दिया। स्टैंड्स फॉर, हम इलस्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट ये यूज़ करते हैं, आप स्टैंड्स फॉर भी यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पे। नेक्स्ट, ईयर को हमने एनम लिखा है। ग्रेजुअल मीन्स स्लो, अब्रप्ट मीन्स सडन, मतलब अगर कोई चीज़ एकदम बढ़ रही है उसे आप क्या लिख दोगे, सडन। नेक्स्ट देखो प्लिमिट, प्लिमिट क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब डिक्रीज़ आता है किसी की वैल्यू में, लाइक 200 से अगर वो सीधा 30 पे गिर रही है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आ गया ना, 170 का डिक्रीज़ आ गया, इट इज़ नोन एज अ प्लिमिट। द लास्ट वर्ड इज़ आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम। और भी इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, यू कैन ट्राई टू यूज़ दैम, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट section, and I hope you all like this video. Thank you guys for watching the video.